पेट साफ नहीं हो रहा है और मुझे वीकनेस, लोअर बॉडी से तो वीकनेस है और ऐसे मेरे हाथ ना ऐसे थर थर काँपने लगते हैं। अभी मुझे वात नहीं आया लेकिन अभी वात भी आने लग गया है यहाँ पे, मतलब 6 महीने मुझे तक शिफ्ट होने। और उसके बाद मुझे मूंगी आती है, थोड़ा भी बैठो ना, नॉर्मल नमाज भी पढ़ो ना तो भी मूंगी आ जाती है। मुझे कभी कभी इस साइड भी आती है, राइट साइड, और कभी कभी मतलब दोनों पैरों में आती है। वॉकिंग ज़्यादा है, चलना पड़ता है मुझे, तो थोड़ा चलती फिरती हूँ, ट्रैवलिंग ज़्यादा है। मैं कंपनी में हूँ, TCS में हूँ। मेरा पेट ही साफ नहीं हो रहा है, तो मतलब मेरा पेट साफ नहीं होता तो मुझे खाना खाने में डर लगता है कि पेट भर के खाओ या नहीं खाओ। थोड़ा भी खाओ तो पेट भर जाता है, क्योंकि पेट में ऑलरेडी मुझे हेवी लगता है। तो अभी 2-3 दिन से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हेवी पेट लग रहा है, वीकनेस है, ऐसे मूड स्विंग्स काइंड नहीं, कि चिड़चिड़पन ऐसा हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन का इशू मुझे है पहले से, ऑलमोस्ट 3 to 5 years। माई नेचर इन दिस वे इट्स कॉकटेल काइंड। मैं कभी बहुत अच्छी और कभी बहुत बुरी, थिंकिंग, काम का, घर का काम, सब कुछ। तो फिर सुबह जल्दी उठने का टेंशन, फिर बाकी लोगों को खुश करने का टेंशन, ये सब कुछ। मैं कभी मतलब स्ट्रेसफुल तो मैं होती है रोज, एवरी डे। मुझे लगता है कि शायद ये काम करूँगी तो खुश हो जाएगा सामने वाला, तो मैं वो कर लेती हूँ। लेकिन मुझे उस तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता जैसे मिलना चाहिए, और वो मेरे दिमाग में बैठ जाता है। और फिर मैं उसी के बारे में सोचती हूँ। एज ट्रैवलिंग में मुझे 2 घंटे का आइडल टाइम मिलता है, मैं वही सोचती हूँ। रिस्पॉन्स आई गेट फ्रॉम देम, आई डोंट लाइक इट मे बी। तो उससे मेरा दिमाग फिर रात भर मैं वही सोचती हूँ, और फिर मेरे को क्रैम्स, मूंगियाँ, गिव अप वाली फीलिंग आती है। शुड नॉट कंटिन्यू। या तो मैं काम छोड़ दूँ जो मैं बाहर जाके कर रही हूँ, या तो फिर मैं सबको खुश करना छोड़ दूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड नॉट कंटिन्यू। मेरे को ये लगता है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग विद देम, मेकिंग देम हैप्पी, ट्राइंग टू मेक देम हैप्पी, एंड इफ आई एम नॉट हैप्पी देन देयर इज नो यूज ऑफ माय लाइफ। सो आई फील टू गो बैक। हाँ, मैं अपने रिलेशंस को बहुत बहुत प्यार से, बहुत केयर से हैंडल करती हूँ। अगर मेरे पास एक ही निवाला रहा तो मैं एक निवाला उसको दे दूँगी जो मेरे साथ है। आई नेवर आस्क पीपल कि भाई मेरे से ना मैं खाऊंगी। पहले मैं ऐसी थी कि मैं अपने मुंह का निवाला दे देती, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे लगता है कि मेरे को नहीं बचेगा, शायद मुझे पहले खा लेना चाहिए। These people will not going to give me that praise which they were giving. For me, if I am spending, if I am working, if I am doing household also, then it's waste of my time and money. Because हमारे उस घर में हमने कभी नहीं देखा। मेरे पेरेंट्स भी लाते थे, मैं भी लाती थी, मेरी सिस्टर भी लाती थी, लेकिन किसी ने किसी को ये नहीं बोला कि तेरा है, क्योंकि सबके लिए सब आता था। So this kind of feeling give me the low kind of level कि यार how I will survive or how my children will survive। हाँ, मुझे जलन होती है, मोस्टली गले में होती है। अच्छा लग रहा है, रिलैक्सिंग लग रहा है, लाइट लग रहा है, पहले हेवी लग रहा था। लाइट इन द सेंस कि एक्सेप्टेंस आ गया है कि वट एवर आई एम डूइंग इट्स फॉर मी ओनली, माई से। सो मैं जो भी करूँ अपने आप को पहले ध्यान में रखते हुए करूँ। अगर मुझे रेडी होना है तो रेडी होना है, अगर मुझे अच्छा लगना है तो अच्छा लगना है, अगर मुझे अच्छा खाना है तो अच्छा खाना है। 70% 7 days खाए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, रेगुलर हो रहा है, मुझे प्रेशर आ रहा है रेगुलर मुझे, पहली बात। दूसरी बात तो मैंने एक्सेप्ट करना सीख लिया शायद, आई डोंट नो, मेरे दिमाग में मेरे चल रहा है तो ठीक है, थोड़ा टेम्पररी लोग आएंगे जाएंगे, खाएंगे, मुझे जो चाहिए वो मैं खा रही हूँ। जैसे आपने बोला कि फर्स्ट फीड योरसेल्फ, सो आई एम डूइंग दैट। मैं जान नहीं चला रही हूँ, मन नहीं मार रही हूँ, खा रही हूँ बिना सोचे, तो उसमें मुझे सेटिस्फैक्शन लग रहा है कि नहीं मेरा टाइम था, मैंने उसको कर लिया। ऐसे दिस डिस्टेंस शुड बी मेंटेन, हर चीज़ नहीं बता सकती मैं ऐसा। पहले मुझे ऐसा था ना कि मैं खाना खाऊँ ना, मेरे को 3-3 4-4 दिन वॉशरूम जाने को नहीं होता था, जिसकी वजह से मुझे तीसरे चौथे दिन खाना खाने का डर लगता था, खाना खाऊँ, क्योंकि पेट एकदम बड़ा हो जाता था, हेवी हो जाता था। अब ऐसा हो रहा है कि मुझे मॉर्निंग में आ रहा है प्रेशर, मेरा मॉर्निंग का शिफ्ट है, तो मुझे जैसे मैं उठती वैसे हो रहा है, तो एक वो अच्छा है। आई वुड से 80%। मेंटली फाइज से तो मुझे ऐसा लगा कि क्योर हुआ है काफ़ी हद तक, 70 to 80% मुझे क्योर हुआ है, और 20% जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो मुझे चेंज करना पड़ेगा। पॉजिटिव चेंज तो कॉन्स्टिपेशन क्लियर हुआ, वो क्लियर हुआ, उसकी वजह से मुझे जो एंजाइटी, हैवीनेस, पसीना या फिर खाने का डर था वो कम हो गया। तो दैट वाज द बिगेस्ट थिंग। वो रेगुलर होता है तो मेरा सब कुछ रेगुलर चलता है, अगर वो रेगुलर नहीं हुआ तो फिर मुझे प्रॉब्लम होती है। मतलब मेरा दिमाग पूरा उस में अब नहीं है वो सैडनेस, अब आई एम फाइन। तो मैंने उस वे में उसको ले लिया कि पॉजिटिव वे में क्या ठीक है, आएगी खाएगी चाहिए, तो मुझे थोड़ा सा करना है, दैट्स इट। तो उस लेवल पे अगर मैं देखूँ पर्सनल लेवल पे, जो मैं इमोशनली वीक समझती थी अपने को, यार इतने लोग क्या कर रहे हैं, हाँ मैं चिड़चिड़ करती हूँ, बट वो मैं खुद से ही करती हूँ, इनके सामने नहीं करती हूँ। अब ना मैं कुछ बोल रही हूँ, दिन की रात की खत्म, ऐसा बस। हाँ, आई एम प्रायोरिटाइजिंग माई सेल्फ, कि मैं उठी हूँ तो मेरा ये मी टाइम, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैं नहाऊंगी, मैं करूँगी, उसके बाद ही मैं आपका देखूँगी। पहले ऐसा होता है कि मैं उठते से अच्छा सबको चाय भी नहीं, सब कोई करना है, नहीं। अभी अगर इनका टिफिन है तो इनका टिफिन पहले बनेगा, उसके बाद बाकी को नाश्ता बनेगा। सो यस, आई एम प्रायोरिटाइजिंग द थिंग्स कि भी नहीं ऐसा होना चाहिए और ऐसा ही होगा। मेरे को सेटिस्फैक्टरी लगा एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि एक ज़िंदगी है, उसमें अगर मैं जान चला के दूँगी तो शायद ही बच पाऊँगी ज़्यादा टाइम तक। तो इट्स बेटर कि मैं उसको एक्सेप्ट करके थोड़ा इसको भी वक्त दूँ कि ये भी निकल जाएगा। मिल रहा है मुझे अभी सोल्यूशन। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सोच रही हूँ ऑटोमेटिकली, मेरे माइंड में आ रहा है कि मैं वो निगेटिव भी सोच रही हूँ। ये 2 चीज़ें हैं कि या तो मैं खुद के लिए सोच रही हूँ या तो मैं किसी और के लिए नहीं सोच रही हूँ। उन्होंने मेरे साथ ये किया, वो सोचती थी यार ऐसे क्यों कर रहे हैं, व्हाई दिस पीपल आर बिहेविंग लाइक दिस, व्हाई दिस पीपल आर, कैन चेंज देम, इट्स बेटर आई शुड एक्सेप्ट देम एंड आई विल कंटिन्यू द वे आई एम, सो आई एम डूइंग दैट।
ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड। होम्योपैथी में मेंटली इंसान स्टेबल होता है, उसका थॉट प्रोसेस चेंज होता है और उसके अलावा उसको कुछ साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो विद दैट, बिकॉज़ वो खाने के लिए प्रॉब्लम भी नहीं होती। इंसान 5 गोली खा लेता है, उसको लगता है कि हाँ, ओके नॉर्मल। सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग व्हिच एवरीवन शुड गो ऑन। लेकिन बेसिक्स अगर तुम क्लियर यहाँ पे करते हो इस काइंड ऑफ इलाज में, आई थिंक बेटर रहेगा कि तुमको फिजिकली कोई हार्म नहीं होगा बिकॉज ऑफ दैट अदर टैबलेट्स जो यूज़ करते हैं मेडिकल से। और इसमें ये है कि तुमको इसका इफेक्ट दिखता है क्योंकि तुम इमोशनली उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, फिजिकली भी उसको ज़्यादा झेलना नहीं पड़ता है। पर्सनल लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए बिकॉज आई हैव टेकन माई सेल्फ एज अ प्रायोरिटी, फर्स्टली प्रायोरिटी। सो मेरी पर्सनल लाइफ में चेंजेस आया है बिकॉज ऑफ दिस टैबलेट। मैं बोल रही हूँ वैसे क्योंकि मे भी मेरा मेंटल बोल रहा है ऐसा, लेकिन मैंने वो खाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मे भी तुम्हारा सेशन ऐसा था कि तुमने मेरे माइंड से सारी नेगेटिविटी निकाल दी और मैंने सब पॉजिटिविटी डाल दी क्योंकि वो खाली था। मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं पॉजिटिविटी डाल, तुमने डाला। तो आई थिंक पर्सनली इट विल हेल्प, इट हेल्प्स एवरीवन, इवन माई मदर इन लॉ ऑल्सो फीलिंग्स बेटर। तो मेरे को लगता है ये बेटर ऑप्शन है कि तुम होम्योपैथी पे जाओ पहले, उसके बाद कहीं और। Hello everyone, this is Dr. Omahani. In our last case, you remember how the mag carb child appeared so calm on the outside, but deep inside she was silently weeping. The sorrow was so deep, so intense, that you could feel it beyond her words. But today's case is completely different. You might have already seen a small glimpse of the testimonial. It's also available on our Homeopathy Success YouTube channel. Today, we're going to talk about a Phos case. Now before we dive into it, I want to share something very important. Whenever you take a Phos case, you'll notice something unique. The problem isn't actually as big as it sounds. It's not a major problem. It's more of a disorder. The patient is simply unable to manage things properly. There's no severe kind of abuse or suffering, but the way the patient expresses it, it feels very sensitive, very emotional. The issue itself is small, yet the person finds it hard to handle life situations smoothly. And that's where our role as homeopaths becomes so important. It's not just about giving the medicine, it's about providing a solution for their life problems or their disordered state. So we have to sit with patients, listen with calmness, and truly understand their story. Only then can we offer them the healing and direction they really need. And in this case, you'll see exactly how that happened. The patient experienced a remarkable change within just 30 minutes of homeopathic medicine and counseling. We guided her on how to manage her time better, how to maintain healthy relationships, and most importantly, the importance of setting healthy boundaries and self-love. By the time she left the OPD, she was already 70% better both emotionally and mentally. It was a quiet afternoon when this patient in her early 30s entered my clinic. She was accompanied by her mother-in-law, a very sweet, gentle, and kind-hearted lady who is already under my treatment. She's a lac-equine patient, and she's doing beautifully well with that medicine. So this mother-in-law brought her daughter-in-law to me. This young woman sat in front of me and softly said, "Doctor, I've been suffering from constipation for the past 4 years, and along with that, I've been feeling depressed." When I asked her about her stress, she broke down. Tears filled her eyes, and she started brooding over every small household affair. She said, "People are good, but I'm not able to manage things properly. I give so much in every relationship, yet I'm not appreciated." Even though she was a professional, earning well, she couldn't manage her workplace and home together. There was constant turmoil inside her. She was independent, yet disturbed by small issues within the family. As I listened, I could sense that the real problem wasn't in the people around her, it was something deeper. She came from a city-based family, and after marriage, she was placed in a village environment. Now, people living in villages and those living in cities, they have different lifestyles, different food, different habits, different patterns of living. City people often live in nuclear families, while in villages, joint families are the norm. So the issue wasn't any kind of abuse, not from her husband, not from her in-laws. The issue was cultural difference, something she couldn't identify, and therefore couldn't manage. Somewhere deep down, she felt left out alone. While talking, I noticed how she constantly compared her parents' house with her husband's house. She wasn't just tired, she was overwhelmed. This often happens when someone who has grown up in a soft, protected environment is suddenly placed in a tougher one. Their emotions get shaken. Their coping capacity weakens. When I asked her, "What do you think is the solution?" she replied, "Doctor, I think I should go back to my mother's home.
I need a divorce. I can't tolerate this anymore. At this point, I want to share something very important. Whenever a person is emotionally disturbed, their thinking capacity drops sometimes to just 10%. In that state, they can't see things clearly or make balanced decisions. But when we as doctors sit with a calm and stable mind, we can see things that the patient cannot. We can understand whether the matter truly needs to go as far as divorce, or if there's another, simpler solution. In this case, I didn't use any repertory. The reason I chose Phos was very clear. She was complaining about a group of people, her husband and family, and she felt exhausted from over-responsibility and overgiving. She was constantly giving, and in return, expecting appreciation and praise but wasn't receiving any. In such a state, the patient's mind becomes locked. So how do you unlock it? In my counseling sessions, when I see cases like this where the problem is not huge but just mismanaged or disordered state, I help the patient gain perspective. I tell them about those who face truly painful realities I see in my clinical practice. Women suffering from domestic violence, whose legs are broken, who are thrown from heights. Yet their parents still say, "Go back, stay in that house." They are unemployed, dependent, helpless, and their struggles are unimaginable. But here, that wasn't the situation. Here, it was simply a difference of culture and lifestyle. Those who are overgiving don't know how to maintain healthy boundaries. They don't realize that before pouring into others, they must first fill their own cup. Self-love is not selfish, it's essential. You could even see it in her appearance. She worked in an international company, yet wasn't taking care of herself at all. Every morning, she would mentally ruin herself and physically exhaust herself. Even though she earned good money, it wasn't serving her happiness. Basically, she was overgiving in her relationships, and in doing so, she was harming her own mental health. Her mind was full of guilt, layers and layers of guilt. In Phosphorus we see, she longed for affection. She used to receive it from her parents, but here she wasn't getting it. That's why, despite earning well, she felt deeply unsatisfied because she wasn't nurturing herself. She described her life like a donkey's routine. She said, "Doctor, my life feels like a machine. I wake up, go to work, come back, cook, clean, sleep, and then do it all again." Every single day, with each repetition, the emptiness within her deepened. The weight of unspoken guilt kept growing, and quietly, she was falling apart inside. She missed the care her parents once gave her. Even though she had money, she didn't want money, she wanted emotional connection. She wanted her husband to take her out, to eat together, to feel seen. Her emotional dependency on him was huge, and that's what was making her restless. So I told her, to regain your self-respect, you must create a little space. Be self-dependent, not emotionally dependent. Start with small acts of self-love. In the morning, get yourself ready first and then serve others in your family. I've seen this pattern in many Phosphorus patients. They give so much that it turns into self-destruction. They forget where to stop, and in giving too much, they lose themselves. That's why, in such cases, it's crucial to teach the patient about healthy boundaries and the importance of self-love. By understanding her nature, her pathology, and her life story, I combined the right medicine with gentle counseling. And together, it worked like magic. Within just 7 days, her 4-year-old problem disappeared completely. She became a brand new version of herself. Confident, calm, radiant, so amazing that she was almost unrecognizable. There is a rubric where the patient desires only sweets, and this reflects their approach to relationships as well. Such a patient prefers pure sweetness that is only affection in every connection. Even the slightest hint of toughness, spice, or challenge in a relationship can make them feel overwhelmed and uncomfortable. Essentially, they expect every relationship in their life to be filled with affection, warmth, and sweetness, without any harshness or bitterness. A worn-out businessman refers to someone who works tirelessly, with no limits on income or effort. Just like our patient, despite being successful and earning well, she was mentally and physically exhausted because she kept overgiving in her relationships, never setting boundaries, and never taking care of herself.
Success and wealth were there, but her inner balance and self-care were missing, leaving her overwhelmed much like a worn-out businessman who has no limit to his work. I hope this session has been insightful for you, and that you've learned something valuable that you can bring into your patients' lives. That was the whole purpose of this session, to add real value and understanding. I hope you enjoyed this case and found it inspiring. See you all in the next study session. Until then, take care, stay motivated, and keep shining. शादी ब्याह, इसको तो लोगों ने इस चीज का जरिया बना लिया है कि यही तो मौका है ये दिखाने का कि हमारे पास कितना पैसा है, हमारे पास कितना माल है, इसी में हमको दिखाना है। मुकाबला आराई चलती है, एक दूसरे को देख करके आदमी ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की कोशिश करता है। देखा जाता है फला साहब ने कौन सा हाल बुक किया था, तो हमको उससे बड़ा हाल बुक करना है। फला साहब का कार्ड कितना कीमती था, उससे ज़्यादा बड़ा अच्छा खूबसूरत कार्ड हमको छपवाना है। फला साहब के यहाँ इंतजामात क्या क्या थे, हमको उससे अच्छा। एक मुकाबला आराई चल रही है, एक मुसाबकत चल रही है, कंपटीशन चल रहा है, जबकि ये मुसाबका, ये मुकाबला दीन के मामले में होना चाहिए था। ये मुकाबला आराई खैर के मामले में होना चाहिए था। दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा अपने अंदर दीनदारी पैदा करते तो कितना अच्छा होता। और ये मुकाबला आराई हमारे सलफ़ में होती थी कि वो दीन और खैर के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। लेकिन यहाँ दुनिया के मामले में, शादी ब्याह के मामले में, रहन सहन के मामले में एक दूसरे से मुसाबकत हमारी जारी है। शादी ब्याह में दिल खोल कर पैसे खर्च किए जाते हैं, पानी की तरह पैसा लुटाया जाता है और खर्च को मज़ीद बढ़ाया जा रहा है। यानी होना तो ये चाहिए था कि ठीक है, ये बिदअतें, ये खुराफात हमारी ज़िंदगियों में आ चुकी हैं, तो इसको हम धीरे धीरे कम करें, इसको हम धीरे धीरे ख़त्म करें। लेकिन ये वक्त गुजरने के साथ साथ और बढ़ती जा रही है। आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले आप देखें कि दस्तरखान पर कितने किस्म के खाने होते थे और आज दस्तरखान पर कितने आइटम होते हैं। कितने आइटम आप देखिए, आप खुद अंदाज़ा लगाइए। चिकन में कितने आइटम होते हैं, मटन में कितने आइटम होते हैं, मीठे में कितने जो है किस्में होती हैं। पूरा दस्तरखान खाने से भर दिया जाता है। लोग नहीं खा पाते हैं और अल्लाह की नेमतों को ज़ाय करते हैं, अल्लाह की नेमतों को बर्बाद करते हैं। कितने गुनहगार हम होते हैं। ये सब फजूल खर्चियाँ हैं, इसकी क्या ज़रूरत थी? कौन सा तकादा ऐसा था जो इसके बगैर नाकिस रह जाता? क्या इसके बगैर निकाह नहीं हो सकता था? ये इस्लाम का कोई प्रोसीजर है जिसका पूरा करना ज़रूरी है? इसके बगैर निकाह नहीं होता? यह तकल्लुफ़ात हमने पैदा किए और हमने बारे खातिर कर दिया, माहौल को, समाज को बिगाड़ दिया। गरीबों को दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं, गरीबों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं शादियाँ करने में। क्योंकि जब इस तरह से जब माहौल बना रहेगा तो सबको इसी माहौल में ढलना पड़ेगा। मुतालबात होते हैं, डिमांड होता है कि हम इतने बारात लेकर के आएंगे, हमारे बारात की अच्छे से खातिर और तवाज़ो होनी चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा उनको खुश करने की कोशिश होनी चाहिए। और कुछ लोग कुछ और चीज़ें इजाफी बार कर देते हैं लड़की वालों के ऊपर। तो फजूल खर्ची इस्लाम के अंदर हराम है और मुसलमानों को चाहिए कि अपनी शादियों को, अपने निकाह को सादगी से अंजाम दें। माहौल को जिस तरह से ख़राब होते जा रहा है, इस पर कंट्रोल करें और हर आदमी ये तय कर ले कि मैं अपने बेटे और बेटी की शादी में फजूल खर्ची से एतराज़ करूँगा, कम से कम पैसा खर्च करने की कोशिश करूँगा और उसके ऊपर वो अमल करे तो इंशाअल्लाह रहमान धीरे धीरे ये सारी खुराफात ख़त्म होंगे और हमारा मुआशरा शादी ब्याह के अंदर रस्म व रवाज से पाक हो जाएगा।